स्पेशली ये शुरू के लेक्चर था आपको तो ओके कुछ पीडीएफ मेरे आगे पीछे होगा इसको मैं ठीक करता हूँ. Okay, whenever we will say a substructure, so we can define subring easily. So let's say if this is my ring R, so a subset S of R is called a subring when itself a ring with respect to the same operation. So with respect to the same addition and multiplication. So if R is a ring, if this is a ring, so a subset S of R is called a subring if S is itself a ring again with respect to the addition and multiplication. Okay, that's fine. Now actually so now we need to identify or we need to develop a test, because if we need to prove that S is a subring, so again we need to if we want to show that the definition, if we want to apply the definition, then we need to show that all axioms of rings would be applicable on S. Now it would be a tedious task. So that's why now, like a group subgroup test and a subspace test, we will develop a sub ring test through which we can check that a given subset of R is a subring or not. Okay. So what is a subring test? Now, if I am assuming that S is a subring of R, if I am assuming that S is a subring of R, then what can I assume? Then I can assume that S is already an abelian group with respect to addition. S is a subgroup with respect to multiplication, and S is a left distributive property and the right distributive property holds. That's fine. Okay, now in order to prove these things, so let's say, so now whenever I want to show that some subset is a subring of R, in fact, you can say that whenever I want to show that S is a subring of R, so I need, so आप यहाँ पे लिखेंगे that to show S is a subring, to show that S is a subring of R, we need to show this fact. We need to show this fact and we need to show this fact. Now, what is the so what we need to show that this thing is an abelian group. So here we can apply for this step. I can apply the subgroup test, and here we need to show that this is a semigroup, and this is a left distributive property and the right distributive property. Okay, now before the proof, just try to see that there are some properties which are termed as hereditary properties. Now, which properties are hereditary properties कह लें या आप उनको induced properties कह लें. For example, if your big structure is commutative, अगर मेरा कोई भी big structure है, भले वो ring हो कुछ भी हो, अगर ये structure commutative है, तो जो इसका सब structure होगा वो भी commutative ही होगा, because whenever you will take two elements, they will commute. So commutative property is a hereditary property. In the same way, if the big structure, if the left distributive property and the right distributive property holds in the big structure, then the left distributive property and the right distributive property hold also on the subset. So hereditary properties means that आप ये बात कर लें कि if a property P, that if a property P is present in R and it holds for all subset, and if okay, and it holds for all subsets of R, then P is called a hereditary property. यानी कि
इनहेरिटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है जिसको भी है, then P is called a hereditary property. Now class, so one can see easily that if R is a ring, one can see easily that R is a ring. If this is a ring, तो कौन कौन सी properties आपको hereditary नजर आ रही है? तो so actually commutative property, again with respect to both addition and multiplication, commutative property, distributive property, one more, associative property. So all these properties are hereditary properties. So actually what we can assume here, so in order to prove this thing, what we can assume here that S के अंदर already ये सारी properties hold करें. Since S is a subset of R, so that's why all these properties will hold automatically. Okay. Now, in order to prove that this is an abelian group, in order to prove this is an abelian group, we need to apply the subgroup test. Now, just try to recall what is the subgroup test. What is the subgroup test? Recall that if A, B are in H, then A, B inverse should be in H. Now here operation is the addition operation, so the inverse operation would be replaced by minus. So actually what is the, so in order to hold this property, what we should, अच्छा ये property तो already hold कर गई, left distributive property, right distributive property hold कर गई. We just need to check that these two things are holding or not. In order to hold this thing, we will apply the subgroup test. Subgroup test क्या बताता है कि for A, B in S हमारे पास क्या होना चाहिए, A minus B भी किस में होना चाहिए, S में होना चाहिए. So if this property holds, then it will automatically imply that this property holds. That अच्छा abelian को हमें check नहीं करना because commutative is a hereditary property. So that's why. So if this property holds, then it will automatically imply that S plus is an abelian group. Okay. Now what we need to show that this is a semigroup. So for a semigroup, we need to show this thing. Okay, operation is a well-defined operation and associative property hold. Associative property automatically hold करेंगे. So we just need to prove that the operation is a well-defined operation. So उसके लिए क्या property show होगी? नहीं, बस closure. That if A, B in S, then A, B, then their product should be in S. So actually this property implies this property. So class, what we have seen that these two conditions are sufficient to show that the given subring, that given subset is a subring or not. Because if the first condition holds, it will imply that S plus is an abelian group. If the second condition holds, it will imply that S dot is a semigroup. And the left distributive property and the right distributive property will hold automatically, no issue. So actually, so this is the subring test. So इसको हम लोग बोलते हैं subring test. So if I want to check, so this is a subring test. So if I want to check that some subset of S is a subring or not, then I need to check this condition or this condition. If these two conditions are okay, then I will say that the given subset is a subring. Fine? Yeah. No, actually. Again, what is the point that here I am assuming, okay, it is okay. One more thing, my assumption that here for a subring, I am not assuming that R is a ring with identity, because one thing I will assume that if R identity में subring में होना जरूरी भी नहीं है, बट ये कि मैं एक यानी कि assume अगर मेरी बात में शुरू से चल रही है कि जो S जिसको मैं R जिसको मैं consider कर रहा हूँ, it would be a ring with identity. So it is possible that R contains an identity, but subring identity subring में present now. So a subring could be a ring without identity. नहीं देखें उसमें जीरो के हिसाब से कर देते हैं, मैं रिंग विद आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, जीरो तो होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज एन एबिलियन ग्रुप, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जीरो तो मौजूद होगा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इट इज एन एबिलियन ग्रुप, तो जीरो तो एस में मौजूद होगा, बट आइडेंटिटी का मौजूद होना जरूरी नहीं,
हो भी सकती है, नहीं हो सकती, but identity in general identity would not be a part of subring. So zero, because since S plus is an abelian group, so for a group additive identity should be present in S. Okay, so 0 is always an element of S, but from here since it should be a subring, तो ring के लिए हमें जनरल पता है कि identity present होना जरूरी है नहीं है. So that's why we could have a ring with identity and all, but we could have a subring without identity. And I will show you this thing through an example. That let's say, so class, any problem here? Because so just try to see that these two conditions are sufficient to show that a given ring is a subring. Given subset of S is a subring. Sorry. Okay, now first ring जो हम discuss करेंगे वो हमारे पास Z होगा. That R it is equal to Z. Okay. Now in this case, let's say मैंने एक subring ले लिया set of even integers. 2Z ले लिया, चले. Set of even integers ले लिया, इसको मैं 2Z लिखता हूँ. Just try to class show that it is a subring. Why it is a subring? Because whenever you will take two elements from 2Z, they are in this form. They are multiple of 2. They are multiple of 2. So whenever you will take the difference, so whenever you will take the difference, अब इन दोनों का difference लेंगे, it is equal to 2x minus 2y, which is, so again a difference is a multiple of, again a difference is a multiple of 2, so it is an element of 2Z. So whenever you will take the product, because you just need to check you just need to check two things. It should be close under difference and it should be close under product. So whenever you will take the product, it is in the form of 2x into 2y. So it is equal to 2 into 2xy. So again, it is a multiple of 2. So it is equal to 2z. So one can check that this thing is a subring. So one can check that, say that 2z is a subring. Okay, now what you can say about set of odd integers. 2 is a subring, and again you can check that identity is not, since although Z is a ring with identity, but 2Z is a subring without identity. Yes. Now what you can say about if S, yeah, मैं इसको S को ले लूं, if S is a set of odd integers, is this a subring of R? Subring है R का. Why? Because you can say that, let's say you will take 3 and 1 from S. इन दोनों का जब difference compute करेंगे तो क्या आएगा? 2. Sorry, ये S है, which is not in S. कौन सा abelian group नहीं है? और abelian तो भाई commutative property हर एक में hold करी है. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कई चीजें कह सकते हैं, बट सबरिंग भी कह सकते हैं. जीरो भी नहीं है, चले ठीक है, आप ये बात भी कह सकते हैं कि इनफैक्ट देयर आर मेनी वेज यू कैन से दैट दिस इज नॉट अ सबरिंग. सो आई जस्ट वांट टू शो यू. अब नाउ आई वांट टू क्लासिफाई ऑल सबरिंग्स ऑफ आर और ऑल सबरिंग्स ऑफ जी. ये आप लोग को बताना चाहिए. आप लोग, आपने सारे सब जी के सारे सब ग्रुप्स को आपने क्लासिफाई किया होगा कि जी के सब ग्रुप्स किस फॉर्म में होते हैं. व्हेनेवर यू विल टेक अ सब ग्रुप ऑफ जी, it is always in a particular form. क्या नहीं इतना आगे कहाँ चलेगा. yes, it is always. So actually आपने ग्रुप थ्योरी में एक चीज पढ़ा होगा, बिकॉज देखें if something is a subring, तो पहले तो उसको सब ग्रुप होना चाहिए ना. पहले तो एबिलियन के लिए with addition सब ग्रुप होना चाहिए. तो it's mean that whenever you want to classify all subrings of Z, so you first need the classification of all subgroups of Z. तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि that all, ये मैं आपको एक रिमार्क बता रहा हूँ, that all subgroups, because if something is a subgroup तभी वो subring होगा. अगर वो एडिशन के लिए ऐसे सबग्रुप होगा then it would be a subring. Okay, otherwise वो तो हो नहीं सकता. अगर सबग्रुप ही नहीं है तो सबरिंग ही नहीं होगा. तो you just try to recall that all subgroups of Z are in the form of NZ. एक इसमें n के मल्टीपल्स आ रहे होंगे, n 2n, n minus 2n, minus n, minus 2n, up to so on, where n is an element of Z.
using the division algorithm, you can prove this thing, this fact easily, that that every subgroup is in the form of NC. Okay. Now actually now इसका मतलब कि अगर कोई सब रिंग्स होंगे तो वो NC में से ही आएंगे. Now I will show you that actually every NC is also a subring, which automatically implies that all subrings are also in the form of NC. Because पहले, in order to see that something is a subring, we need to show that it should be a subgroup with respect to addition. And we know that with respect to addition, all subgroups are in the form of NC. It means that यही सिर्फ हमारा candidates है जो subrings के लिए आ सकते. So now what is the point that each NC is a subring of Z. So NC is a subring of Z. And how can you prove it? You can prove it easily. Take two elements in NC, then they are a multiple of n, that A is a multiple of n and B is also a multiple of n. Okay, both are multiples of n. So if you take the difference, it is also a multiple of n. And if you take the product, it is also a multiple of n. So it implies that NC is a. So since all subgroups are in the form of NC and all NC are subrings, so here you can give the remark that all subrings of Z are in the form of NC. चलिए ठीक है सर. चलिए इसका मतलब हमने एक NC कम से कम Z के हमने सारे subrings को classify कर लिया. Now at least in the case of Z, which whenever I will assume that take a subring, so you can always assume it is in the form of NC. Okay, it is okay. That's fine. अब हम एक नए रिंग के ऊपर आते हैं. Okay, let's say my favorite. हाँ, ZN के ऊपर भी आता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है इनफैक्ट द सेम केस होल्ड्स फॉर ऑल ZN आल्सो. अब मुझे ये ZN के शायद आपने भी देखे हो, ZN के भी सारे सब ग्रुप्स आपने क्लासिफाई किए होंगे कि ZN के सब ग्रुप्स हम लोग कैसे नहीं निकाल रहे. तो अगेन इन द केस ऑफ ZN जितने सब ग्रुप्स होते हैं सारे सब रिंग्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई वी कैन कंप्यूट देम इजीली. ओके, बल्कि डिस्कस कर लेते हैं ZN को भी. ZN के सब ग्रुप्स को डिस्कस कर लेते हैं. सो बिकॉज जो सब ग्रुप्स होंगे वही फिर सब रिंग्स भी हो जाएंगे. सो एनी आइडिया कि इसके ZN के जो सब ग्रुप्स होते हैं वो हम लोग किस तरह से कंप्यूट करते हैं? डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होना चाहिए. बिल्कुल. जैसे चले मैं Z6 की बात कर लेता हूँ. मैं Z6 की बात कर लेता हूँ ना. मैं Z6 के अगर मुझे सब ग्रुप्स निकालने हो तो मैं क्या लूंगा? 6 के डिवाइजर्स लूंगा. 6 के डिवाइजर्स क्या है? 2 और 3. तो जस्ट मैं क्या करता था कि अच्छा, इसमें असल में काफी थ्योरी भी इन्वॉल्व है कि हमें पता होता है कि इसके ये साइक्लिक ग्रुप है, इसके सारे सब ग्रुप भी साइक्लिक होंगे, तो वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो होंगे. तो वो बेसिकली जनरेट होते थे n/d से, अगर आपको याद हो, where d is a divisor of n, d is a divisor of n. तो जितने भी सब ग्रुप होते थे वो हमेशा, कोई भी सब ग्रुप होता था, h अगर सब ग्रुप होता था, अगर h सब ग्रुप होता था, अगर h सब ग्रुप होता था Z6 का, सॉरी या Zn का, तो ये फॉर्म होती थी. तो h सब ग्रुप होता था Zn का, तो ये फॉर्म होती थी. It should be generated by n/d, where d is a divisor of. Okay. So in this way we can classify all subgroups. So you can say that all. So what you can say, class, that here in this case, all subgroups are in the form, are in this form. Okay, every subgroup is generated by n/d, where d is a divisor of 6n. So for example, if r is equal to Z6, तो इसके मुझे सब ग्रुप्स निकालना. तो Z6 के डिवाइजर क्या होते थे? 1, 2 and 3. These are divisors.
तो अगर मैं 6/1 करूंगा तो 6/1 क्या होता है, 0 होता है। इससे जो सब ग्रुप जनरेट होगा वो क्या होगा, वैसे 6 की क्लास क्या होती है, 0 होती है ना। तो इससे जो सब ग्रुप जनरेट होगा वो ट्रिवियल सब ग्रुप जनरेट होगा, वो ट्रिवियल सब ग्रुप जनरेट होगा। इन द सेम वे 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 3 बार होता था, 3 बार से जो सब ग्रुप जनरेट होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 0 एंड 3। इन द सेम वे 6 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो इससे क्या आएगा, 2 बार। इससे जो सब ग्रुप जनरेट होगा वो क्या आएगा, 0 बार, 2 बार एंड 4 बार। So actually these are all subgroups, and all subgroups could be computed in this. So again, what is my claim, that every subgroup here which is in the form of which is in this form, which is generated by n over d, it is also a subring. So again, what is my claim, that any subgroup which is h is equal with any subgroup n bar over d bar is a subring. और चेक करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज अगेन सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो चेक कैसा कर सकते हैं, दैट अगर मैं इफ आई टेक 2 एलिमेंट्स h एंड देन बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ, बिकॉज साइक्लिक है ना, साइक्लिक का मतलब क्या होता है, मैं इनको ऐड करता चलूँ, तो एक्चुअली अगेन बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ, so both are multiples of n over d. So a is a multiple of n over d and b is also a multiple of n over d. So whenever I will take the difference, so again I will get a multiple of, so again I will get a multiple of n over d, and if I take the product, so again I will get a multiple of n over d. So one can check easily. So it's mean that जब हम सारे सब ग्रुप्स निकाल सकते हैं तो वही सारे सब ग्रुप सब रिंग्स है, तो हम सारे सब रिंग्स भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो अगेन वी कैन easily classify all subgroups or subrings of Zn. Okay, तो अगेन ये कुछ नई बात नहीं है, सारा कुछ ग्रुप थ्योरी से आ रहा है, बिकॉज ग्रुप थ्योरी का बैकग्राउंड इसमें जरूरी है कि ग्रुप थ्योरी से आपको मालूम होना चाहिए दैट हाउ आई कंप्यूटेड दी सब ग्रुप्स। सो एक्चुअली वहां से हमें क्लासिफाई हो जाता है कि ऑल सब ग्रुप्स आर इन दिस फॉर्म, and then and also I proved that all these subgroups are subrings. So class, what we did, we classified all subrings of Z. We classified all subrings of Zn. Any problem? Okay. Yeah. आपसे किसने कहा कि सब रिंग ये हो भी सकता है? देखिए सब रिंग के लिए मैंने क्या कंडीशन रखी, मैंने सब रिंग के लिए आपको जब डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपको ये बताई थी कि जो एस होना चाहिए वो सेम हो। पहली बात है कि आपको ये बात पता है कि 0, अगर आप नंबर थ्योरी कि Z2 सबसेट नहीं है Z3 का, सबसे पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए। ये डिफरेंट मॉडल क्लासेस है, ये डिफरेंट मॉडल क्लासेस है, तो अगर सबसेट ही नहीं है तो सब रिंग की तो बात ही नहीं आती। और दूसरी बात, इनके जो ऑपरेशन है वो भी डिफरेंट है, वो मॉडलो 3 एडिशन है, ये मॉडलो 2 ऑपरेशन है, तो ये सेंस नहीं बनाती ये बात ना, क्योंकि सबसेट ही नहीं है। असल में हर 0 1 2 लिखा होता है तो शायद बच्चे के जहन में आ जाता है अच्छा ये वही वाला 0 है। जो Z2 का जो 0 है वो उस 0 से अलग है जो Z3 का 0 है, ये बात आपको अंडरस्टैंड है। तो दैट्स व्हाई ये इसका कोई सेंस नहीं है इसको कोई चेक करना। ओके, सो नाउ पॉलीमल रिंग, जिसको मैं पहले लिख रहा था R is equal to R. Now in this case, let's say take a set S. सारे सब ग्रुप जरूरी है कि सब रिंग हों? हाँ ना, वही मैंने प्रूफ किया ना भाई, सारे को सब ग्रुप्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ n over d, दे आर ऑल साइक्लिक्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ n over d, तो वो सब रिंग्स भी होंगे, सारे सब ग्रुप सब रिंग्स होंगे, साइक्लिक है ना। तो उसके सारे साइक्लिक होने की वजह से सारे सब रिंग्स, सारे सब ग्रुप्स हमेशा साइक्लिक होते हैं, और हमें पता उनके जनरेटर्स भी हमें मालूम होता है कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ, उनके जनरेटर्स n over d की फॉर्म में, ओके, ड्यू टू द लैग्रांज मेनी थिंग्स।
और ये क्वेश्चन था बुक के अंदर के Z6 का सबरिंग ऑफ Z7 तो उस कॉन्टेक्स्ट तो में उसी कॉन्टेक्स्ट में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ही आप ये बात लिख सकते हैं। अच्छा नहीं है हाँ नहीं है। Now take all, now I am considering polynomial ring over C, and now I am considering all polynomials with constant term 0, and set S1 consider कर रहा हूँ and S2 भी consider कर रहा हूँ, and also I am considering all sub rings, अच्छा with f of 0। अच्छा ये बात अच्छा एक चीज मैं आपको को बताना भूल गया था कि इन अ पॉलिनोमियल whenever you plug 0 in the polynomial तो आपको क्या मिलती है? If you plug 0 in the polynomial, let's say ये polynomial है, f of x is equal to a n xn, actually you will get the constant term. So whenever you will plug 0, so you will get the constant term. So it means that whenever I am saying that f is equal to cx such that f of 0 is equal to 0, what is the meaning of this thing? I am considering all those polynomials such that their constant term is equal to 0. And here I am assuming all polynomials such that their constant term is an even integer. So class, now try to check yourself that both S1 and S2 are subrings. Because what is the logic? If you have two polynomial with constant term 0, इनको subtract करेंगे, again you will get a polynomial with constant term 0. If you have a two polynomial with constant term 0, उनको multiply करेंगे आपस में, again you will get a polynomial with constant term 0. That's fine. तो पहला S1 तो बहुत easily आपको नजर आ रहा है. Now what is the second part? If you have a let's say अगर आपके में दो polynomials हैं, f of x a n xn, such that उनकी constant term क्या है? Even integer है. And g of x is another polynomial with such that this thing is an element of 2z and this thing is an element of 2z. So if you add these two polynomials या subtract these two polynomials, so again subtraction में जो constant term क्या आ जाएगी? नहीं, constant term क्या आ जाएगी? a naught minus b naught आ जाएगी ना? And since a naught is an even integer, b naught is an even integer, so that's why this thing is also an even integer, which shows that this whole thing, this whole polynomial, because here I am assuming that this is an element of S1 and this is an element of S1, so their difference is also an element of S1. Because if constant terms are in, then the difference of the difference is also then the constant term of the difference is also an even integer. In the same way, if you multiply f of x with g of x, so there are 2 points. So what you can say about constant term? यहाँ पे constant term क्या होगी? जब दो पॉलीमर को मल्टीप्लाई कराते हैं तो उनके प्रोडक्ट की पॉलीमर constant term क्या होती है? It is a naught into b naught. So I will get some polynomial with constant term a naught and b naught. And since a naught is an even integer, b naught is an even integer, so a naught b naught is also an even integer, which implies that this whole polynomial is also an element of S2. So मैंने class computation पूरी नहीं लिखी, but you can see that both S1 and S2 are subrings. So these two examples are examples of subrings. Okay, so but still this is a problem that how can we classify all subrings? So but I have मैं subring से ज़्यादा जब हम बाद में ideals का concept होगा, then I will show you that actually we can also classify for some polynomial ring, not all polynomial ring, for some polynomial rings we can classify their ideals. But actually these are two examples. So मैं दिखाना चाह रहा था कि सब polymer ring के अंदर भी कुछ जो subsets होते हैं, सब rings होते हैं, किस form में होते हैं. Okay, now one more example. Let's say just take the set of all diagonal matrix
just take the set of all diagonal matrix in M2. So this is a subset of M2 cross 2R. Now one can see that this S is a subring. Why this S is a subring? Because if you will take two matrices from S, so again they are in the form of A1 0 0 B1, and the matrix B is also in the form of, because both matrices are diagonal matrix. So whenever you will take the product of diagonal, whenever you will take the difference of diagonal matrix, again you will get a diagonal matrix. Which is equal to A1 minus A2 0, B1 minus B2. Okay. And whenever you will take the product of two diagonal matrix, what is the product of these two diagonal matrix? Product in किसके बराबर आएगा? So A1 0, A1 A2, and this is A2 0 B2. So this is equal to A1 A2 0 and B1 B2. So which is again a diagonal matrix. So that's why the set of all diagonal matrix is a subring of the matrices. No issue. Okay. Now one more important ring. एक ring की भी example है. This is termed as a ring of Gaussian integers. As a ring of Gaussian integers. So Z iota. So Z iota actually it is a set of all complex numbers, such that both real and complex, both and real and imaginary part are integers. So this is a ring of Gaussian integers. So this is a ring. So one can check easily that this is a ring under normal addition, because under normal complex number addition and complex number multiplication. So this thing is a ring under complex addition and complex. So we know how to add two complex number, add real part with real part, add imaginary part with imaginary part. We know how to multiply two integers. So under complex multiplication and complex addition, this thing is a ring. So one can see easily that Z is a subset of Z iota, because whenever you will take all Gaussian integers with imaginary part is equal to 0, then you will get, जैसे हमें पता है ना कि सारे real complex होते हैं, सारे real complex तरह से होते हैं, because real you can consider a real number as a complex number with imaginary part equal to 0. In the same way, all integers are Gaussian integers with imaginary part is equal to 0. And moreover, Z is a subset, and in fact you can check that Z is a subring. That Z is a subring of Z iota. Because why? Because Z is a subset of Z iota, and Z हमें पता है itself क्या होता है, ring होता है. So that's why you can say that Z is a subring. इसकी और भी subrings हम लोग निकाल सकते हैं. For example, just write. अच्छा, अब ये बताएं कि मैं एक और सेट लेता हूँ इसमें. मैं सारे ऐसे Gaussian integers ले लेता हूँ जिनका real part non-zero, real part 0. They are in this form. अब ये बताएं कि ये रिंग है, ये सबरिंग है कि नहीं? This is not a subring. S is not a subring. Why S is not a subring? Because whenever I will take two Gaussian integers in this form, ये कि ऐसे Gaussian, तो इनका प्रोडक्ट लूं, तो इनका iota iota क्या आ जाएगा? minus B1 B2 आ जाएगा, which is not in S form. So that's why it is not a subring. Okay, so ये एक इमेजिन कर सकते हैं ना, जैसे आपने कहा कि भाई जितने अगर ऐसे सारे इंटीजर्स ले, ऐसे सारे गॉसियन इंटीजर्स ले लूं कि जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, तो वो तो Z है और वो सब रिंग बना रहे हैं. बट इफ आई टेक द गॉसियन इंटीजर्स व्हिच रियल पार्ट इज इक्वल टू 0, देन इट इज नॉट अ सब रिंग. Okay, so now we classify, we know के सब रिंग का आइडिया क्या है, कई सारे सब रिंग्स को हमने क्लासिफाई करवा लिया. Okay, one thing I want, क्योंकि मैंने Gaussian integers को पढ़ाया, so one can see that Z iota is a ring with identity, because one इसमें मौजूद है. Z iota is a ring with identity. Now, what is the second thing you can say about this ring? This is a commutative ring. This is a commutative ring.
Now the interesting part, what you can say about units of Z iota? याद है, मैं याद कर लूंगा सही ना। नहीं तो ठीक है, तो नहीं प्रूफ करके दे, ठीक है। वो आपकी बात, मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करके करूँ, मुझे कोई ऐसा ये नहीं है, मगर कुछ तो होगा ना। तो इनफैक्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप भी होता है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये आपने ग्रुप भी पढ़ा होगा। ओके सो बट ये कि अरे इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग इनके वो आपको ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको ट्राई कर सकते हैं। आपने जैसे क्लेम किया, बल्कि आपको नहीं मालूम ना शुरू में, अभी आपको नहीं मालूम कि कौन से यूनिट्स। भाई गाउसियन इंटीजर लें, उसका यूनिट निकालने की कोशिश करें, उसका यूनिट क्या होगा, फिर कंडीशन लेके भाई कौन से एलिमेंट्स यूनिट होंगे। सो फॉर एग्जांपल टेक अ गाउसियन इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल मैंने गाउसियन इंटीजर लिया a + आयोटा b व्हिच इज अ यूनिट। तो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, नेचुरली व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट? नहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करो, भाई 2 का इनवर्स क्या होता है, 1/2 होता है ना, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1/a + आयोटा b। तो इट्स मीन, और इसका मतलब है कि जो 1/a + आयोटा b होगा वो भी किसका एलिमेंट होगा, c आयोटा का एलिमेंट क्या होगा। मैं अज्यूम, क्योंकि कोई एलिमेंट अगर इन्वर्टेबल हो तो उसका इनवर्स भी उसमें मौजूद होगा ना। तो इट्स मीन दैट सो एक्चुअली दिस इम्प्लाइज, अगर ये इनवर्स है तो इसका मतलब 1/a + आयोटा b भी किस में बिलोंग करेगा, c आयोटा में बिलोंग करेगा। अब देखिए ये बड़ा इजी पार्ट होता है कि व्हेनेवर अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन, आपने हमेशा से एक्सरसाइज करी होगी, यू नीड टू फाइंड आउट द इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा गुड पार्ट हो बाय मल्टीप्लाइंग इट्स कॉन्जुगेट। तो एक्चुअली दिस इज माय अजम्पशन, ये मेरे पास अजम्पशन है कि ये एलिमेंट किस में मौजूद है, z आयोटा में मौजूद है। नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द इमेजिनरी पार्ट एंड द रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर। ओके कैसे निकालेंगे, क्या मेथड होगा, कुछ याद आ रहा है क्या? ये तो रैशनलाइजेशन से हो जाएगा ना, a/a² हाँ + b² - b। So actually I will try to, because मुझे a और b पे कंडीशन निकालनी है ना कि कौन से a और b के ऊपर ये होल्ड करता है। So I will multiply and divide by its conjugate. So what I will get? अब ओके नाउ इट्स मीन, और ये हमारी assumption के ज़ाहिर सा इसको जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो अगेन दिस इज एन एलिमेंट ऑफ z आयोटा, क्योंकि हमने तो इसी की रिप्रेजेंटेशन लिखी ना, ये एलिमेंट z आयोटा में मौजूद है ना, बिकॉज दिस इज आवर assumption that inverse of a + आयोटा b is an element of z आयोटा। नहीं अब हम निकालेंगे कौन से केस के लिए ठीक होगा, हर केस के लिए तो गलत नहीं हो सकता ना। अब हम नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन से केस के लिए ठीक होगा। नाउ इट्स मीन दैट दिस थिंग शुड बी एन इंटीजर एंड दिस थिंग शुड बी एन इंटीजर। तो ये दोनों चीजें कब इंटीजर होंगी, ये फ्रैक्शन कब इंटीजर होगा, जब डिनोमिनेटर क्या होगा। सो एक्चुअली यस, सो एक्चुअली a/a² + b। सो एक्चुअली अगर ये z आयोटा में है तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि a² + b² किस में बिलोंग करेगा, z में बिलोंग करेगा। तो ये कब z में बिलोंग कर सकता है, व्हेन द डिनोमिनेटर इट इज इक्वल टू 1। a² + b² 1 के बराबर है और a एंड b आर इंटीजर्स। इस इक्वेशन के सोल्यूशन निकाल लो, इंटीजर सोल्यूशन निकाल लो कि कौन से होंगे। a एंड b आर इंटीजर्स एंड a² + b² इज इक्वल टू 1। सो इसके मुझे इंटीजर सोल्यूशन बता दो। अगर मैं 1 0 0 1 - 1 0 0 - 1, a को मैं 1 ले लूं, b को 0 ले लूं, देन दिस इज अ सॉल्यूशन। a को नहीं, हाँ ठीक है, a को -1 ले लूं, b को 0 ले लूं, a को 0 ले लूं, b को 1 ले लूं, एंड a 0। तो एक्चुअली दे आर 4 सॉल्यूशंस। हर सॉल्यूशन को यहाँ पे प्लग करें। फॉर द फर्स्ट सॉल्यूशन ये नंबर क्या होगा, फॉर द फर्स्ट सॉल्यूशन ये नंबर क्या होगा, जब मैं a को 1 b को 0 रखूं तो ये नंबर क्या निकलेगा। जस्ट if I will put the second solution I will get -1. If I will put the third solution here I will get iota, and for the fourth solution I will get minus iota. So it shows that actually these are only
4 possible elements which are invertible here. So what is the answer of this question? Actually, units of Z2, it is equal to 1, -1, iota and minus iota. Okay, simple. So what you did, you just assumed that something is a unit. फिर आपने उसका जो inverse था उसको rationalize किया, and if that inverse is an element of Z iota, तो उसके सारे imaginary part और real part Z iota होने चाहिए. And from here you implied that denominator it is equal to 1. Now you need to solve that equation. अगर real में solve करना तो मसला होता है, but you just need to solve this equation in integers. So in integer only there are 4 solutions, and all 4 solutions actually induced 4 Gaussian integers which are invertible. Okay, so actually this is a proof, not very difficult, simple proof. ये असल में मुझे जाते हुए एक्सरसाइज नजर आ गई थी, तो मैंने कहा इस एक्सरसाइज को सॉल्व ही कर लो. ओके, नाउ जल्दी तो नहीं है ना इमरान? आज दूसरी क्लास और किसी की भी 1 बजे क्लास नहीं है. That's a good thing. क्या? क्या? नहीं हाँ वो तीन इंटीग्रल डोमेन है. वैसे अगर कोई चीज समझ में सीख रहा है तकरीबन मैंने 6 एक्सरसाइज करवा दिया. ओके चले कुछ इससे मैं मोटिवेशन चले एटलीस्ट डिस्कस कर लूँ, क्योंकि उसको हम बाद में फिर डेफिनेशन आ रहा हो उसको हम कर लेंगे और सिर्फ कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे. अच्छा, अब आप ये बताएंगे, आप लोग मुझे ना इक्वेशन सॉल्व करके बताएं. आपका नाम बोलिएगा. आप व्हाट्स योर नेम? मिसबा. सो मिसबा, प्लीज सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर मी. बल्कि मैं और भी आसान करता हूँ और थोड़ा. सॉल्व प्लीज करके बताइए कैसे आप सॉल्व करना हो. क्या आपने कहा मैंने इसकी फैक्टराइजेशन करी, x - 2 into x - 3. यार मैं तो अभी कुछ आए नहीं, मैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करवा रहा हूँ. आई एम जस्ट सॉल्विंग, वी आर जस्ट सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, एंड एक्चुअली आई एम अज्यूमिंग कि ये जो पॉलिनोमियल है ये चले zx में है. ये जो पॉलिनोमियल मैंने इसमें अज्यूम किया हुआ है ये zx में है, क्योंकि अब हमें किसी ने तो एक्चुअली सो एट दिस स्टेप व्हाट यू डिड, तो आप फिर क्या करते हैं बड़े मजे से x - 2 को 0 रखते हैं, x - 3 को 0 रखते हैं और 2 सोल्यूशन निकाल लेते हैं x = 3. सो एक्चुअली यहाँ से जो यहाँ पे आना है ना, इट इज ऑब्वियस. एलिमेंट्री क्लासेस में इट इज ऑब्वियस होता है, बट नाउ वी विल सी दैट ये हमारे लिए इतना ऑब्वियस यानी कि नहीं होगा, बिकॉज हियर वी आर व्हाट इज द असम्पशन. हम यहाँ पे क्या अज्यूम करें दैट व्हेनेवर द प्रोडक्ट ऑफ 2 थिंग्स इज इक्वल टू 0, either one thing should be equal to 0. Either a is equal to 0 whenever the product is equal to 0. Either a is equal to 0 or b is equal to 0. But actually we will see that there are rings here which thing doesn't, this phenomena or this thing doesn't hold. Here ऐसे कई रिंग्स हो सकते हैं जैसे Z6 में it is possible. और इस सोल्यूशन मैंने ये देखें ये एग्जाम्पल इस वजह से दी है क्योंकि बाद में मैं ये देखूंगा कि अगर मैं कई ऐसे रिंग यानी कि इक्वेशन सॉल्विंग में ऐसी एब्स्ट्रैक्ट किस्म की चीजें आ सकती हैं, जैसे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 सॉल्यूशंस होते हैं, मगर इस एब्नॉर्मलिटी की वजह से कि जहाँ पे 2 चीजों का प्रोडक्ट, 2 नॉन जीरो चीजों का प्रोडक्ट भी 0 के बराबर हो सकता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन भी नजर आना शुरू होते किसी जगह पे due to this formula. So due to a very simple abnormality that whenever the product of 2 things is equal to 0, we cannot imply that both either any of the element is equal to 0. For example, in Z6, if we take the product of 2 and 3, it is equal to 0, but both elements are not equal to 0. So इसका मतलब कि कहीं हमारे पास ऐसे रिंग्स एग्जिस्ट कर दें कि जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी यानी कि होल्ड यानी कि करती है, और इन रिंग्स के ऊपर अगर हम पॉलीमर रिंग्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उनके अंदर
एक ये वाली जो एबनॉर्मलिटी मैंने आपको जो बताई थी वो चीज़ भी डिस्कस करके वो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर मैं G6 की पर लेकिन ये तो इक्वेशन ही C6 में होल्ड नहीं करेगी जो आपने लिखी है। हाँ तो एग्जाम्पल है ना वो ये, तो नहीं जो एग्जाम्पल ऊपर जो ये तो मैंने अब x स्क्वायर माइनस 5x कर रही है, ये तो होल्ड कर रही है, मगर मैं जब बाद में आपको कंस्ट्रक्ट करके बताऊंगा तो z over z it is holding, यानी कि this is an obvious step. So actually here in this step what you are assuming that this thing is an that actually this thing is an integral domain. थोड़ा सा लेना है, मुझे टाइम दे दो, फिर मैं actually from this step to this step you are assuming that this abnormality, that this kind of abnormality is not holding in Zx, because Zx में आप assume करें कि whenever the product of two things is equal to 0, either one of the things is equal to 0. तो इसका मतलब जिन रिंग्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही होती कि जहाँ पे ये abnormality हमें नजर नहीं आ रही, उन रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्रल डोमेन्स बोलते हैं. तो एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन इंटेग्रल डोमेन जहाँ पे हमें इस किस्म की एबनॉर्मलिटी नजर ना आए. तो एक्चुअली सबसे पहले इस टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो डिवाइजर बोलते हैं. व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ जीरो डिवाइजर, बिकॉज इफ द प्रोडक्ट, देखें डिवाइजर का मतलब क्या होता है, देखें आपको नंबर थ्योरी नंबर से पता है कि इफ ए बी इट इज इक्वल टू सी, तो आप ये डिड्यूस कर सकते हैं ना कि ए डिवाइड सी. तो इसका मतलब दैट इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 एंड बोथ ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0, तो शायद आप यहाँ से डिड्यूस कर सकेंगे दैट ए डिवाइड 0. इट्स दैट, तो यहाँ से एक मोटिवेशन निकली कि ए को हम क्या बोलते हैं, जीरो डिवाइजर बोलते हैं. सो अब हम प्रॉपर डेफिनेशन कर लेते हैं दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ जीरो डिवाइजर. दैट एन एलिमेंट अ जीरो डिवाइजर is a non-zero element A. अच्छा, in this discussion I am also assuming कि जो रिंग है वो कॉम्पिटिटिव है, अदरवाइज वहाँ पे मुझे लेफ्ट और राइट जीरो डिवाइजर्स अलग से डिफाइन करना पड़ता है. ऑफ अ कॉम्पिटिटिव रिंग R such that there exists an element B in R which is not equal to 0, and the product of A and B it is equal to 0. So this is the definition of a zero divisor, that if a non-zero element is called a zero divisor if the product of that non-zero element with not with any, such that there exists a non-zero element B such that the product of A with B it is equal to 0. So this is the definition of a zero divisor. That ये एलिमेंट कब जीरो डिवाइजर कहलाएगा, जब एक कोई और नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करे सही दैट इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो थिंग्स इज इक्वल टू 0, देन वी विल से दैट बोथ थिंग्स आर जीरो डिवाइजर. From this definition you can also imply that B is also a zero divisor. So simply if the product of two non-zero things is equal to 0, then both things are zero divisors. So actually one can see that okay, so example for example 2 and 3 in Z6, so 2 and 3 are zero divisors since the product of 2 and 3 it is equal to 0. In the same, okay, now what is the next definition? Next definition that we are looking for an integral domain. So actually an integral domain, for it is a commutative ring with identity. It is a commutative ring with identity. And what is the main property? It should be free from zero divisors. It should be free from zero divisors. कि कोई इसमें zero divisors exist नहीं करेंगे. So it should be free from zero divisors. So this is an integral domain. So actually from here you can simply imply that C6 is not an
इंटीग्रल डोमेन, ओके दैट्स फाइन। बट जो फेमस स्ट्रिंग्स हमारे पास होते हैं, जो यूजुअली हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल आर, जी, आर, क्यू, जी आयोटा, these are they are integral domain because z में क्या z, हाँ वो भी होता है, मगर उसको थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ेगा ना, ठीक है, वो इतना ऑब्वियस ही नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे p क्यों होता है भाई, चले z, जैसे z6 का तो मैंने एग्जांपल लेके बता दिया, अब अगेन आप सवाल तो पूछना क्यों होता है zp, क्या आप इसका मतलब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि zp में कोई जीरो डिवाइजर्स नहीं, तो कोई ना कोई तो लॉजिक तो होगी ना zp में जीरो डिवाइजर्स नहीं होते। वो मैं करके दिखाऊंगा, बिल्कुल आपको मैं करके दिखाऊंगा, अभी करके दिखा दूंगा। असल में वो हमारे पास कंडीशन ये होती है, जो यूनिट एलिमेंट होता है ना वो जीरो डिवाइजर नहीं होता, जो यूनिट जीपी में सारे यूनिट्स होते हैं तो उसका मतलब वहाँ पे जीरो डिवाइजर, ये लॉजिक है। बट ये कि कर लेते हैं थोड़ा सा भी, दैट कुछ एग्जांपल देख लेना, दैट से सो दीज आर इंटीग्रल डोमेन्स। जीपी में चले मैं आपको करके बता देता हूँ कि जीपी में वो क्या रहा। तो एक्चुअली नाउ व्हाट आई एम क्लेमिंग, जीपी में करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए जीपी में क्या हो रहा होता है कि लेट से आपने एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया जीपी का, तो व्हाट इज माय क्लेम दैट व्हेनेवर यू विल टेक अ नॉन जीरो एलिमेंट इन जीपी, ए बार is not a zero divisor. A bar इसका मतलब ये कि whenever you will take a non-zero element, it is not a zero divisor. It means that ZP is free from zero divisor, which implies that ZP is an integral domain. Why? Because अगर आपने A bar को for any अगर आपने ये क्लेम किया कि for B bar in ZP, कि कोई एलिमेंट अगर आपने B बार लिया ZP में और उसको अगर आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या गया जीरो, अगर मुझे ये शो करना है कि A इज नॉट अ जीरो डिवाइजर, सो व्हाट आई नीड टू शो, देखिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। नो अगर देखें B भी अगर नॉन जीरो हो गया तो A तो क्या होता नहीं, B जीरो का, बिकॉज अगर B भी नॉन जीरो हो गया तो A तो जीरो डिवाइजर हो जाएगा। इफ यू वांट टू शो, so in order to show actually in order to show that A bar is not a zero divisor, so this is my claim, actually ये मेरा claim था कि whenever you will pick a non-zero element, it is not a zero divisor. So in order to show that A is not a zero divisor, we need to show that B is equal to zero. हमें शो करना पड़ेगा, we need to show B is equal to zero. तो बहुत इजी है, किस तरह से शो करोगे भाई? सर वो तो बहुत आसान है, A times B equals to some n times x। नहीं इतना मुश्किल भी नहीं है। आज की क्लास में मैंने आपको भाई A अगर नॉन जीरो एलिमेंट है जीपी में तो A क्या होगा, जीपी में तमाम नॉन जीरो एलिमेंट्स क्या होता है, शुरू की क्लास है बताया था, यूनिट्स होते हैं। तो कोई एलिमेंट यूनिट है तो A उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, तो मल्टीप्लाई since A is a unit, since A is a unit, so इस वाली क्वेश्चन के दोनों साइड से आपने A इनवर्स मल्टीप्लाई करा दिया, so A इनवर्स आपने मल्टीप्लाई करा दिया इसके बोथ साइड से, ओके। तो यहाँ से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ से A इनवर्स इंटू A हो गया इंटू B हो गया, ये जीरो के बराबर हो गया, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई एनी एलिमेंट विद जीरो, आंसर इज इक्वल टू जीरो, सो इट इम्प्लाइज दैट B bar इज इक्वल टू जीरो, सिंपल। एंड y इज अ यूनिट मैं डिस्कस करता हूँ, बिकॉज इन ZP एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट, so since A is a unit in ZP, so that's why we multiply A inverse on the both sides of this equation, which implies that B bar is equal to zero. So this thing shows that A is not a zero divisor. So what we proved that we took an arbitrary element of ZP, an arbitrary non-zero element from ZP, and we proved that not a arbitrary not element is
not a zero divisor, which implies that ZP is free. ZP is already a commutative ring with unity. Now this thing implies that ZP is free from zero divisor. So which shows that ZP is an integral domain. Now this thing is an example of an integral domain. अच्छा, हम ये इसका मतलब ये क्लासिफाई कर सकते हैं कि ZP तो इंटीग्रल डोमेन है, तो हम एक और एग्जांपल को भी क्लासिफाई कर सकते हैं. अगर मैं Zn ले लूं, जैसे मैंने Z6 कहा, और n प्राइम नहीं है, n प्राइम नहीं, इसका मतलब n कॉम्पोजिट है, और n इज अ कॉम्पोजिट नंबर, देन व्हाट वी कैन से कि ये इंटीग्रल डोमेन होगा कि नहीं. जैसे Z6 था, इट इज नॉट एंड वाई, तो उसमें तो है, मगर यहाँ पे क्या लॉजिक लोगे. देखो असल में देखो, बात को कहना सीखो ना, बात को कहना सीख. नहीं, GCD नहीं, मैंने जस्ट क्या प्रूव किया, मैंने कहा मैंने Zn ले लिया, प्राइम ले लिया, और n को कॉम्पोजिट ले लिया. एंड आप लोगों ने सब कह रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है कि दैट दिस इज नॉट एन इंटीग्रल, दैट दिस इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन. ओके, दिस इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन. सो व्हाट यू नीड टू शो, नहीं यार, इंटीग्रल डोमेन के लिए, नॉट इंटीग्रल डोमेन के लिए आपको शो करना है दैट इट हैज अ जीरो डिवाइजर. अब आप कैसे शो करेंगे, देखें, अब आप जैसे मैंने वहां पे प्राइम पी को पकड़ा था, मैंने लिया कि प्राइम पी के लिए सारे एलिमेंट्स यूनिट्स होते हैं, तो मैंने वहां से प्रूव कर लिया. यहाँ पे जो असल में आप लोग देख नहीं रहे, मैंने एन को लिखा है कॉम्पोजिट. कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? एक्चुअली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, देखें अब आप मैथमेटिक्स को इस तरह करना सीखें. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और इनमें से ये दोनों जो नंबर्स होंगे ये 1 और n के दरमियान के नंबर्स. अगर मैं पॉजिटिव अज्यूम करूँ ना, सारी चीजें पॉजिटिव अज्यूम करूँ, इट कुड बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच आर बिटवीन 1 and n. जैसे 6 है, 2 और 3 का प्रोडक्ट कंप्यूट किया जा सकता है. सो दिस इज द लॉजिक. तो इसका मतलब आपने Zn में a बार की क्लास को कंसिडर किया, तो दैट इज n को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट n कुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ab. तो इसका मतलब Zn में एक, बिकॉज a and b आर लेस देन n, तो इन दोनों की जो रिस्पेक्टिव क्लासेस होंगी वो Zn में मौजूद होंगी. इट्स मीन दैट ab किस में मौजूद है. सो दिस इम्प्लाइज दैट a बार एंड b बार Zn में मौजूद है, और दोनों नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं. एंड वेन एवर आई विल टेक द प्रोडक्ट, तो इन दो का प्रोडक्ट लूंगा तो किसके बराबर आएगा, n बार के बराबर आएगा. और n बार की क्लास Zn में क्या होती है, which implies that a and b are zero divisors. तो इसका मतलब हमने बड़ा क्लासिफाई कर दिया कि Zn को ना, पहले तो Z और R आयोटा बाहर है, तो ये तो सब तो होते ही हैं, ये कि जीरो, ये तो सब जीरो डिवाइजर्स, फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर्स होते हैं. बट इन द केस ऑफ Zn हमने क्या कर लिया, दैट इफ n, if we are working with a modulo prime number, then it is an integral domain, otherwise it is not an integral domain. Now one last example, so this is an interesting example that what you can say about, okay, सी डायरेक्ट सम. आई थिंक मैंने आप लोग को ये पढ़ाया नहीं, रिंग को डायरेक्ट सम अभी पढ़ाया नहीं है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मैं यहीं से स्टार्ट करूँ, डायरेक्ट सम से स्टार्ट करके फिर आप लोग को एग्जांपल बता के, एंड देन या no, it is not a factor group, it is a direct sum of two groups, Cartesian product. Actually elements, चलिए यार, अब आप actually it elements are in actually Z cross Z and Z direct sum Z इक्वल ही होता है. मैंने आप जब तक फाइनाइट केस में जा रहे हैं ना, then both are equal. फैक्टर ग्रुप तो G डिवाइड बाय होता है, G डिवाइड बाय, that is the factor. Okay. कोई बात है, कोई बात. इसके ऐसे क्या, अच्छा चलो.
Hello? 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 Thank you. हेलो हाँ यार ऐसा लंच किया मुझे नहीं पता इसमें यही रिंग उसमें भी यही रिंग हाँ एग्जैक्टली उसमें तो मैंने वो दोनों रियल उसमें एडवांस इंटीग्रेशन वगैरह नहीं उसमें रिंग वगैरह बस शुरू में ही आते हैं, वो कलेक्शन को प्रूव करना, अदरवाइज वो नहीं है, वो अलग है। आपके शुरू में रिंग लग रहा है ना, वो अलग दैट्स वो उस कलेक्शन को जो हम लोग सबसेट्स की कलेक्शन लेते हैं उनको सिग्मा रिंग वगैरह बनाते हैं, उसे हम काम करते हैं, मगर उससे ज्यादा उसमें और चाहिए, वो शुरू में आ जाती है फिर बाद में और चीजें चलती है, तो कंपैरेबल नहीं है बिल्कुल। लैग्रांज लेबेक इंटीग्रेशन वगैरह पहले मेजर थ्योरी आती है, ओपन सेट्स मेजर कंप्यूट करना से You appreciate it?